Assalamualaikum dear students, how are you? Today we will discuss IELTS writing task 2 and in writing task 2 IELTS writing tips mastering the art of paragraphing. Many IELTS writing courses and blogs cover the topic of linking words. There are words or phrases that help glue the sentences and paragraphs together. They guide and direct the reader and prepare himself for new ideas. They guide and direct. So, for example, you might highlight your main points using ordinals like firstly, secondly, and thirdly. You might also want to show contrast by using linkers, however, in spite of and while. You can also use linking words to show the beginning or end of an argument, like to begin, to start, in summary, or all in all. Whichever linkers you use, it is important to know that a well-linked paragraph is both easier to understand and easier to read. मीन्स कि आपने जब भी कोई पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो उसके स्टार्ट में जैसे टू बिगन विद लिखने हैं, टू स्टार्ट विद, टू एम्बार्क ऑन, इस तरह के कुछ वर्ड्स आपके होने चाहिए। और अगर आपने जो है पैराग्राफ के मिड में कोई आपने फिर एक बात करके उसको फिर फर्दर एक्सप्लेन करना है तो फर्दर मोर, मोर ओवर, इन एडिशन टू, तो कुछ इस तरह के जो हैं जो लिंकर्स वर्ड्स हैं इसको लाजमन यूज करना है। हाउ टू राइट टास्क टू, एकेडमिक एंड जर्नल ट्रेनिंग दोनों के जो राइटिंग टास्क टू हैं सेम होते हैं। तो ये मेन क्रक्स क्या है, ये जो है राइटिंग टास्क जो है ये मेन क्रक्स है। और इसमें मोस्ट ऑफ आइट्स राइटिंग टास्क टू इजी फॉलो द सेम बेसिक फोर पैराग्राफ स्ट्रक्चर, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। सेकंड में स्पोर्टिंग पैराग्राफ वन एंड स्पोर्टिंग पैराग्राफ टू, ये फर्दर हम इसी में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो है स्लाइड्स आएंगी। एंड फोर जो है वो आपका कंक्लूजन है। जैसे अब ये क्वेश्चन है कि सम पीपल थिंक दैट पेरेंट्स should teach their children how to be good members of society. Others, however, believe that school is the best place to learn this and discuss both views and give your opinion. मीन्स आपने अपनी ओपिनियन भी देनी है उसमें। ये नहीं है कि आपने बस वो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिस्कस कर देना और दूसरा जो है वो आपसे जो है वो स्किप हो जाए या उसको आप बिल्कुल ही ना डिस्कस करें। सो पहले जो है ये आपका देखेंगे, जो फर्स्ट आ रहा है ना आपका, जो ये वाला पोर्शन है ये आपका इंट्रोडक्शन है। ये सारा इंट्रोडक्शन है। सम इंडिविजुअल्स बिलीव दैट द राइट प्लेस टू टीच चिल्ड्रन हाउ टू बिकम गुड सिटीजन इज द स्कूल। मीन्स के ये एक जो है स्टांस है। वाइल अदर्स आर्ग्यू दैट पेरेंट्स शुड बी द वंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ऑल्दो पेरेंट्स माइट इन्फ्लुएंस देयर चिल्ड्रन मोर देन एनीवन एल्स। आई बिलीव, आपने अपना स्टांस उन्होंने पूछा है ना, आपने अपना स्टांस देना है, गिव योर ऑन ओपिनियन। उन्होंने यहाँ पे पूछा भी है कि गिव योर ऑन ओपिनियन, so you must have to give your own opinion. So I believe that educational institutions are more trained and equipped to teach children how to become successful members of the community. ये आपका इंट्रोडक्शन है, इसी को फिर आपने फर्दर एक्सप्लेन करना है। आपका जो बिलीफ है, आपका जो स्टांस है वो आपने वहाँ पे लिख दिया है। सो नेक्स्ट, पेरेंट्स इन्फ्लुएंस देयर चिल्ड्रन मोर देन एनी वन एल्स। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट मदर्स एंड फादर्स are the ones who raise and spend most of the time with their children. Yes, who dramatically influences the way children act and think. अब ये जो है ये आपका बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। एक बॉडी पैराग्राफ ये है एंड सेकंड ये नेक्स्ट वाला है। यहाँ पे बॉडी पैराग्राफ में भी आपने पहले जो है अपना जो है एक ओपनिंग लाइन देनी है और फिर उस ओपनिंग लाइन को फर्दर एक्सप्लेन इस तरह करना है कि उसमें आपने अपना आर्गुमेंटेशन भी देनी है और आपका उसमें एग्जाम्पल भी आनी चाहिए। मीन्स कि जो आपने कहा है उसका प्रूफ सामने आ जाए और विद इन वेरी शॉर्ट टाइम एंड विद इन 8 to 10 लाइन्स। अब पहला जो आपका ये है, पेरेंट्स इन्फ्लुएंस देयर चिल्ड्रन मोर देन वन एल्स, मोर देन एनी वन एल्स। दिस इज, अब आपने नेक्स्ट कह के दिस, वाई दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट मदर्स एंड फादर्स आर द वंस हु रेज एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। आपने उसको बता दिया कि इसकी रीजन क्या है। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे, इफ पेरेंट्स एक्ट इन अ गुड मैनर देयर चिल्ड्रन विल इनडायरेक्टली इमिटेट देम। मीन्स कि अगर पेरेंट्स अच्छे हैं तो चिल्ड्रन भी उनको जो है वो सपोर्ट करेंगे।
और सॉरी उसको जो है वो इमिटेट करेंगे, उसकी नकल करेंगे, उसी तरह बनना चाहेंगे। दिस फोर्टिफाइज द फैक्ट दैट नो वन माइट exert such a strong influence on their children। अब इस तरह का इम्पैक्ट जो है वो किस कोई बाहर से कोई जो है थर्ड पर्सन जो है वो जो चिल्ड्रन है, उन बच्चे हैं, उनके ऊपर नहीं डाल सकता। अब देखिए नेक्स्ट मैंने एग्जांपल भी दी है कि मैंने जो बात की है उसकी एग्जांपल भी होनी चाहिए ना कोई। फॉर एग्जांपल, अ स्टडी इन ब्रिटेन showed that children are 2 times more influenced by their parents than their teachers। Simple। However, I believe that this is not enough, that school should be the place teaching children to become a good people in society। Simple। सो नेक्स्ट ये पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ 1 एंड है, एंड नेक्स्ट पे आ जाएं। तो अब ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है। स्कूल्स आर ट्रेन टू बिल्ड गुड सिटीजन। देखिए फर्स्ट जो लाइन है ना, ये इसको ओपनिंग लाइन कहते हैं, और ये बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। स्कूल्स आर ट्रेन टू बिल्ड गुड सिटीजन, इट मीन्स कि आपने जो है आप स्कूल वाली जो है बात को फोकस करना चाह रहे हैं। टीचर्स स्पेंड देयर अंडर ग्रेजुएट ईयर स्टडिंग how to deal with children and train them to become their individuals in their communities। For this reason, educational institutions should be the place where children can safely acquire the needed behaviors to become better individuals in the future। For example, a recent study in USA, देखें अब मैंने खुद यहाँ पर देखें, यहाँ पे फिर एग्जाम्पल आ गई कि आपने जो बात की है उसकी कहीं ना कहीं कोई एग्जाम्पल भी मौजूद है या वैसे ही आपने लिख दी है। A recent study in the USA showed that 90% school train teachers how to help students to become better citizens। For this reason, यहाँ पे आप for this reason भी कह सकते हैं, और इसके अलावा आप इसमें 100 या 10 इन दिस वे कुछ भी आप लिख सकते हैं। आई बिलीव दैट बेस्ट प्लेस टू डू दिस इज द स्कूल। मीन्स आपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को जो है सपोर्ट कर दिया है। Next, in conclusion, है although parents have a strong influence on their children, I believe that the best place to create better citizens is the school, because tutors are trained to do that। जो tutors को train किया जाता है, ये आपका conclusion है। ये बात। अब इसमें आप देखें कि आपने 4 जो है उसको पार्ट्स में आपने क्वेश्चंस को जो है वो ब्रेक किया है। पहला इंट्रोडक्शन था, सेकंड जो है वो आपका बॉडी पैराग्राफ, थर्ड वन इज आल्सो बॉडी पैराग्राफ, एंड फोर्थ वन इज कंक्लूजन। अब इन ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई इतना बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जितना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। कि सिंपल आपने क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है उसके पार्ट्स में, और हर पैराग्राफ में आपने एक बात कहनी है, और उस बात को आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद एक छोटी सी एग्जांपल दे के आपने कह देना कि बस ये वाली मेरी बात जो है प्रूफ हो गई है। दैट इज वाई आई हैव बिलीव दैट चिल्ड्रंस फॉर चिल्ड्रंस स्कूल आर बेटर, आर पेरेंट्स आर बेटर। इट्स वेरी सिंपल। अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट। Look at the following examples and think about what the examiner wants, which one is a good essay and which one is not। Question क्या है कि some parents think that child care centers provide the best services for children or of preschool age। Other working parents think that family members such as grandparents will be better carriers for their kids। Discuss both views and give your opinion। देखिए सैम्पल 1 में मैंने एग्जाम्पल दिया, इसको रीड आउट करें। यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल्स भी दी हैं आपको। जो उसका फर्स्ट ओपनिंग सेंटेंस बन रहा था उसको सारा एलेबोरेट भी किया है। ईच एंड एवरीथिंग इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट सैम्पल 2 है। ग्रैंड पेरेंट्स आर द बेस्ट पीपल टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। अब इसमें देखें कि पहले पैराग्राफ में मैं ज्यादा चीजें डिस्कस की हैं, और दूसरा जो है वो बिल्कुल शॉर्ट सा है।
मीन्स टू दी पॉइंट है, लेकिन उसमें कुछ एग्जाम्पल नहीं दी, कुछ मैंने प्रूफ नहीं किया, तो पहले वाला ऑब्वियसली अच्छा पैराग्राफ होगा। तो आपने पहले वाले पैराग्राफ को ही फॉलो अप करना है। Sample one has one main argument parents before, and they stated this clearly in the first sentence and then explain why. Yes, and sample two has many different arguments and most of them are very general. They have not been extended with explanations and lack examples. वही बात। How to write a topic sentence? अब topic sentence कैसे लिखना है? The very first sentence in your supporting paragraph should be the topic sentence. Each paragraph should have one main idea only, and the topic sentence tells the reader what this idea is. This makes your paragraph and the whole essay clearer and easier to read. You will gain marks for coherence in the IELTS writing test if you do this. Think of them as signposts that direct the reader to where you want to go. We think of topic sentences in an argument, means agree या disagree, जो भी आपने करना है, ऐसे by thinking of ideas about why we support one side or the other. Let's look at the another question. Most high-level positions in companies are filled by men, even though the workforce in many developed countries is more than 50% female. Companies should be required to allocate a certain percentage of these positions to a woman. Do you agree? मीन्स इसमें ये है कि हाई लेवल पोजीशंस पे जो कंपनीज में है, वहाँ पे जो है वो मेन फिल हैं, इवन दो द वर्कफोर्स इन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज इज मोर देन 50% फीमेल। कंपनीज वो कह रहे हैं कि शुड बी रिक्वायर्ड, उनको चाहिए कि वो एलोकेट करें अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ दीज पोजीशंस टू वुमेन, कि वो वीमेन को जो है वो ये वाली जो वैकेंसीज हैं वो अलॉट करनी चाहिए उनकी प्रोग्रेस के लिए। सो वी हैव टू थिंक ऑफ रीजंस फॉर एंड अगेंस्ट एलोकेटिंग अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ पोजीशंस इन द वर्कफोर्स टू वुमेन। मीन्स कि अगर आपने इसके जो हैं इसके आप इसके फेवर में जाना चाहते हैं, तो आपको फेयरनेस की बात करनी चाहिए, इक्वालिटी की बात करनी चाहिए, प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन की बात करनी चाहिए, वेमेन आउट परफॉर्म मैन इन मैनी जॉब्स, ये वाला आपको पॉइंट जो है वो डिस्कस करना चाहिए। वीमेन आउट परफॉर्म मैन इन मैनी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स, इसको भी आप एलेबोरेट कर सकते हैं। ये देखें आपके जो 5 पॉइंट्स बन जाते हैं। मीन्स कि आपके ये 5 के 5 पॉइंट्स को आपने इसके ऊपर एक 4-5 लाइनें लिखनी है और उसके बाद अपने एग्जाम्पल देके इसको प्रूफ करना होगा। अगर आप इसके अगेंस्ट में हैं तो क्या लिखना होगा? शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट नॉट जेंडर, एंड अ फ्यू जॉब्स लाइक कंस्ट्रक्शन आर बेटर suited टू मेल्स। ये वाले 2 पॉइंट्स बन जाएंगे। उसके बाद है आई सपोर्ट द फॉर कैटेगरी, सो आई विल पिक द 2 reasons and write topic sentences for them. You should always pick the ideas you know most about, or in other words, can explain and support them with examples. अब देखिए पहला सेंटेंस जो है वो क्या है? आपका टॉपिक सेंटेंस 1 है, वुमेन शुड बी एलोकेटेड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ रोल्स बिकॉज टू नॉट डू सो डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट देम बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। टॉपिक सेंटेंस दूसरा क्या होता है? फीमेल शुड बी गिवन अ बिगर शेयर ऑफ जॉब्स बिकॉज वुमेन करंटली आउट परफॉर्म मेल्स इन मोस्ट यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स। As you can see, all I have done is introduce my ideas clearly. There is no need to use a very advanced language to this. Stating your position in simple language is all you need to do. मीन्स कोई बड़ी हाई फाई लैंग्वेज, ये कोई आपको ऐसे बड़े बड़े वोकेबलरी के वर्ड्स को यूज़ करने की जरूरत नहीं है कि जो उसके आपने जो है वो एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है कि मुझे बहुत वोकेबलरी आती है। नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। आपने बस अपनी बात को बड़े सिंपल वे में जो है वो समझाना है, और कोई ग्रामर की गलती नहीं होनी चाहिए, कोई स्ट्रक्चर नहीं खराब होना चाहिए, तो आप मैक्सिमम बैंड्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनिंग योर आइडियाज। Explaining ideas is a problem for most students, not because they cannot do it, but because they do not see the point in doing it. They think that the examiner must be educated and that explaining simple ideas to them wastes their time. You should never assume this. Instead, I tell my students to assume that the reader has no knowledge of this subject, and you need to explain what you mean for them to understand. मीन्स ये नहीं समझना कि एग्जामिनर को तो ये भी पता होगा, इस बात का भी पता होगा, तो मैं नहीं लिखता, शायद ये बच्चों वाली बात है। नहीं नहीं, आपने ये समझना है कि एग्जामिनर को इस बारे में कुछ नहीं आइडिया, एंड यू आर द मास्टर, एंड यू आर एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग
विद ईच एग्जांपल्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स। और फिर आपने ये माइंड में रख के जो है वो लिखना है कि आप एक एक चीज जो है वो एग्जामिनर को बताना चाह रहे हैं, और हर पॉइंट को आप इलेबोरेट इस तरह कर रहे हैं कि जैसे जैसे कोई मीन्स कि कोई लेमैन भी पढ़े तो उसको भी पता चल जाए कि ये लिखना क्या चाह रहा है, सिंपल। लिंकिंग में फिर दिस इज टू से इन अदर वर्ड, दिस इज बिकॉज, द रीजन इज, एज अ रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस, देयरफॉर, हाउएवर, फर्दर मोर, जो मैंने पहले स्टार्ट में बताया था कि ये वाले वर्ड्स लाजमन यूज करने हैं। इससे जो है वो आपकी जो राइटिंग है वो थोड़ी सी एक किस्म का ना उसमें ब्यूटी आती है कि आप इनको लिंक करके जो है वो अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंसेस को दूसरे सेंटेंसेस के साथ लिंक कर रहे हैं। अब यही वही सेंटेंसेस हैं, इसमें आप देखें कि वही लिंकिंग वर्ड्स भी मैंने यूज़ किए हैं, और इनको आप जो है वो एक किस्म का थॉरोली रीड आउट कर लें इनको। And next last is another example of paragraph writing. We just also have to write it on.